Hello dear kids, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 4 here. This is the cover page of your book. Let's click a trendy way to learn computers. So children, today we are going to start our book with the very first chapter and the name of the chapter is Data, Storage and Memory. So let's start with the chapter. In this chapter, children, we are going to learn about what is computer memory and types of computer memory. Measuring of computer memory. How can we measure the computer's memory? Yes, memory means किसी भी चीज को remember करने की ताकत. That is called memory. In your previous classes, you have learned about tables, addition, subtraction, etc. So, आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं अपनी previous class में. It was your mind that saved all the information for you in your memory, which acted as a storage device. So, हमारा mind था वो जिसने इन सब को जो है सेव करके रखा हुआ था हमारे लिए. सो हमारा माइंड क्या है? हमारे लिए एक स्टोरेज डिवाइस. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट कंप्यूटर मेमोरी. अब हम इस चैप्टर में कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के पास कैसी मेमोरी होती है और वो कैसी चीजों को लर्न करके रखता है. व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? CPU is the brain of computer. हमने बचपन से पढ़ा है कि CPU is known as the brain of the computer. It processes all the information it receives through input devices and stores it in computer memory. So CPU क्या करता है? हम जो भी input devices रहते हैं उनके थ्रू जो भी हम information CPU को भेजते हैं वो उसे याद करके रखता है, उसे store करके रखता है. The storage capacity of a computer is called its memory. कंप्यूटर के जो भी storage capacity है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है. कंप्यूटर मेमोरी is used for storing data and instructions. So कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो किस काम आती है? डेटा को स्टोर करके रखने के या फिर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखने के काम आती है. Now let's read about the types of computer memory. Computer memory can be classified into two categories. दो parts में divide किया गया computer memory को. They are primary memory and secondary memory. तो जैसे हमारे बॉडी में जो ब्रेन होता है उसके भी दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन, वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी भी टू पार्ट्स में डिवाइड की गई है. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी. So here we can see the picture और इसके थ्रू हम आसानी से इसे समझ सकते हैं. So in this the computer memory is divided into the first part that is primary memory and the second part the secondary memory. Primary memory क्या होती है? It is divided into two parts, RAM and ROM, and ROM is again divided into three parts, PROM, EROM, EEPROM and EEPROM. Next, secondary memory, hard disk, CD-ROM, DVD, pen drive, Blu-ray disc and memory cards. So, the secondary memory is divided into all these parts and but our primary memory जो है दो parts में divide है, RAM and ROM. RAM के भी तीन parts हैं. क्या क्या है? PROM, EEPROM and EEPROM. So now let's quickly come to the next page and here we are going to learn about primary memory. क्या होती है primary memory? Let's read. Primary memory is also known as the main memory or the internal memory. Primary memory जो है उसे main memory कहते हैं या फिर internal memory कहते हैं. It is the inbuilt memory that is fixed inside the CPU. ये inbuilt memory है जो CPU के अंदर fix रहती है, उसे हम हटाते नहीं हैं. It stores data and instructions currently used by the computer. So computer के जो भी data या instruction हम देते हैं वो सब कुछ इस primary memory में ही store होता है. The minimum set of primary memory is
The minimum size is 256 MB. We can increase its size any time. So किसी भी वक्त हम इसकी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं और जो इसकी जो मिनिमम साइज होती है मेमोरी की वो है 256. Primary memory can be divided into two parts, that is RAM and ROM. So here we can see this is a picture of RAM and below ROM. RAM stands for Random Access Memory. क्या होता है RAM? Random Access Memory. RAM refers to read and write memory. So इसमें हम क्या कर सकते हैं? Read and write memory से क्या कहा जाता है? Information can be written onto and read from RAM. So जो भी information है उसे हम इसमें लिख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं. RAM is volatile in nature. ये volatile होता है nature में. So whenever power fails or the computer is switched off, all the information that has been stored in RAM is lost. So volatile means कि इसमें जो भी चीजें हम डालते हैं वो तुरंत डिलीट हो जाती हैं जैसे ही RAM के को हम स्विच ऑफ कर देते हैं. कंप्यूटर को जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया तो इसमें जो भी चीजें हैं वो तुरंत ही डिलीट हो जाती है. इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन अ टेम्पररी बेसिस. इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होता है, मीन्स उसी टाइम के लिए स्टोर होता है. स्विच ऑफ जैसे किया कंप्यूटर या लाइट चली गई तो रैम का जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी डिलीट हो जाती है. नेक्स्ट कम्स द रोम. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है. एंड टू कीप द डेटा परमानेंट इट इज वॉलेटाइल इन नेचर. ये नॉन वॉलेटाइल है नेचर में और ये डेटा को हमेशा के लिए सेव करके रखता है, चाहे लाइट जाए चाहे कुछ भी हो. Okay, it retains the data even the computer is switched off. कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी जैसे हम इसे ओपन करेंगे कंप्यूटर को, जो भी चीज हमने उसमें सेव की थी वो सारी चीजें हमें रोम में हमारे मिलेंगी. So these are the two memories. Now in most computers ROM is used for storing a special program called BIOS. So BIOS को स्टोर करने के लिए कई सारे कंप्यूटर्स में रोम को यूज किया जाता है. बायोस का क्या मतलब है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. दिस प्रोग्राम हेल्प्स टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन. सो जैसे ही कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं सो जो ये प्रोग्राम क्या करता है, ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होते ही सब चीजों को एक्सेस कर देता है. दिस प्रोग्राम हेल्प्स इन टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में हेल्प करता है. देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोम. 3 तरीके के रोम हैं. PROM, EPROM and EEPROM. So PROM stands for Programmable Read Only Memory. It is a memory chip on which we can store a program. So एक मेमोरी चिप है जिसमें हम प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकते हैं. बट वंस इट हैज बीन यूज्ड वी कैन नॉट इरेज इट. लेकिन जैसे हमने इसको यूज कर लिया हम उसको इरेज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट इरेज इट स्टोर्ड इंफॉर्मेशन और यूज इट टू स्टोर समथिंग एल्स. और कुछ और स्टोर करना है हमें तो उसके लिए भी हम इसे यूज नहीं कर सकते. इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस. सो कुछ स्पेशल कंडीशंस है उसके अंदर ही हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं. नहीं तो हम एक बार कोई चीज इसमें सेव कर दी तो हम उसे डिलीट नहीं कर सकते या कहीं और यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट कम्स द EPROM. EPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल. इरेज कर सकते हैं. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी and we can erase its store information by exposing it to ultraviolet rays. आपको पता है ultraviolet rays क्या होते हैं? सन की जो रेज होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज होती है. सो जैसे ही हम EPROM को अल्ट्रावायलेट रेज में ले जाएंगे तो हम उसके अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम इरेज कर सकते हैं. EPROMs are cheap and reliable and hence they are widely used. ये बहुत ज्यादा रिलायबल है, मीन्स विश्वास कर सकते हैं हम इनके ऊपर, और बहुत ज्यादा चीप है, मीन्स सस्ते हैं. सो दैट्स व्हाई ये हर जगह बहुत ज्यादा यूज होते हैं. EPROM. नेक्स्ट कम्स डबल EPROM. ये डबल EPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी.
So the information written on it can be erased using electrical signal. So electrical signals की मदद से हम इसके जो भी चीजें हमने इसमें सेव कर रखी हैं वो सब हम इसमें से इरेज कर सकते हैं. So this is our double EEPROM. Now let's read about the secondary memory. Secondary memory क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. Secondary memory is known as auxiliary memory. ये एक auxiliary memory है और external memory है. It is used to store information for a longer period of time. So इसमें जो information है वो लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं. It is needed because primary memory of the computer is insufficient to store save large amount of data for future references and retrievals. So secondary memory की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हमें इसमें सेव करना है, स्टोर करना है लंबे समय तक तो हम इसमें सेव कर सकते हैं. लेकिन प्राइमरी मेमोरी जो है उसमें क्या होता है कि इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को उसमें सेव कर सके. फॉर दैट वी यूज द सेकेंडरी मेमोरी. सो दिस मेक्स आ वर्क मोर इजियर और कंटेंट को हम लंबे समय तक सिक्योर कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं. Let us now discuss some of the secondary storage devices. So we are going to learn about some secondary storage devices. First is the hard disk. A hard disk is also known as fixed disk. Hard disk को fixed disk के नाम से भी जाना जाता है. It is the main secondary storage device found inside the cabinet of CPU. So hard disk क्या है? ये main secondary storage device है जो CPU cabinet के अंदर होता है. And it can store large amount of data up to 8 TB. 8 TB तक की storage इसके अंदर हम कर सकते हैं. All the work done in computer can be stored in a hard disk. Hard disk में हम कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं वो सबको हम स्टोर कर सकते हैं. Hard disk is made up of many rigid metals. आप देख सकते हो ये बहुत सारे मेटल से बनता है. Rigid means बहुत ही आप कह सकते हो कठोर मेटल से बनता है. Coated to store data magnetically. So इसमें डेटा जो है मैग्नेट की मैग्नेट्स वगैरह होते हैं इसके अंदर जो हेल्प करते हैं डेटा को अच्छे से स्टोर करने में. Nowadays external hard disks are also available. There are small and in size and can be carried anywhere. So ये जो है आजकल क्या हो गया है कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी बन गए हैं जिसको हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और ये इन हार्ड डिस्क से छोटे होते हैं साइज में. Next comes the CD-ROM. Here is a picture of CD-ROM and it stands for compact disk read-only memory. So it is popularly known as CD. CD के नाम से भी जाना जाता है and it is thin circular disk with a reflective metal coating. ये पतली सी circular means गोल डिस्क है जिसके अंदर रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग होता है. मेटल की कोटिंग होती है जो रिफ्लेक्ट करता है मीन्स आप इस पे कोई रोशनी डालोगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. द डायमीटर ऑफ द CD रेंजेस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर. सो टीवी जो होता है जो CD होता है इसके जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी. दिस इज कॉल्ड अ डायमीटर. मिडिल से जब हम उसे नापते हैं तो डायमीटर कहलाता है. सो ये या तो 10 सेंटीमीटर हो सकता है या फिर 30 तक हो सकता है. A typical CD measures 4.7 inch in diameter. So जो CD होता है, जो normal CD होता है वो इतने इंच का होता है डायमीटर. One CD can store 600 to 750 MB of data. So इतना डेटा एक CD अपने अंदर स्टोर कर सकता है. So this was our CD-ROM. Now let's learn about DVD. DVD is also known as digital versatile disk और digital video disk. दोनों ही सही हैं, दोनों ही हम बोल सकते हैं इसे. It is very similar to a CD. CD जैसा ही दिखता है. You can see here
but can store much more data. लेकिन CD से ज़्यादा डेटा ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है. It is an optical disk storage device and its capacity may range from 4.7 GB to 17 GB. तो इतने GB तक ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है. Next is our pen drive. Here is the picture of our pen drive. सबने देखा है, आजकल सब यूज करते हैं. A pen drive is also known as a flash drive. इसे flash drive के भी नाम से जाना जाता है. And it can be used to store and transfer data from one computer to another. So एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें डेटा को स्टोर करना है तो हम उसके लिए पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं. It can be connected to USB. So ये USB में हम कनेक्ट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं ये USB पोर्ट होता है इसका, इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं USB में. And USB means Universal Serial Bus port of a computer, and it can store a large amount of data like 1 GB, 2 GB and more. So 1 GB से स्टार्ट है और इससे अधिक जितने GB का पेन ड्राइव हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं. Next comes the Blu-ray disc. Here you can see this disc looks a little blue color का थोड़ा सा दिख रहा है हमें. So this is a Blu-ray disc. A Blu-ray disc is similar to CD or DVD. CD, DVD जैसा ही दिख रहा है in appearance, but can hold up to 128 GB of data. So 128 GB तक का डेटा ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है. It uses blue-violet lasers to read and hold a large amount of data. So ये क्या यूज करता है? ये blue-violet laser को यूज करता है to read and hold large amount of data. Large amount of data को read करने के लिए, hold करने के लिए ये Blu-ray laser को use करता है. A Blu-ray reader is required to use a Blu-ray disc. So Blu-ray disc को अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपके पास Blu-ray reader होना चाहिए, नहीं तो आप ये disc नहीं चला सकते. It is mainly used for storing very high quality video files and video games that require large amount of storage space. So ये इसमें क्या होता है, इसके पास जो है बहुत सारी स्टोरेज स्पेस होती है, हाई क्वालिटी की स्पेस होती है जिसमें आप आराम से फाइल्स या फिर वीडियो गेम्स को भी स्टोर कर सकते हो. Next comes a memory card. This is a picture of a memory card. We use this in our mobile phones and also for our cameras also these are used. We use this in our you can say in our computers also. A memory card is used to store data in various electronic devices like mobile phone, digital camera, MP3 player and many other portable devices. It is small in size and can store up to 32 GB of data. तो 32 GB तक का डेटा ये स्टोर कर सकता है and we can transfer the data stored in the memory card to our computer. So मेमोरी कार्ड में जो भी डेटा हम डालते हैं वो हम इजीली अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. Floppy disk and zip disk are also example of secondary storage devices. So दो और secondary storage devices के नेम दिए गए हैं. These are floppy disk and this zip disk. They are outdated and now not in use. So पहले यूज हुआ करते थे ये, but अब ये यूज नहीं होते. So ये भी दो secondary storage devices. So children, here the workout is given and I am going to fill some, but rest you have to do by yourself. So here in the first blank, computer memory is divided into primary memory and secondary memory. Primary memory is divided into RAM and ROM, and secondary memory is divided into many. So CD, DVD and Blu-ray disc, and rest too you have to write by yourself. Here P, ROM, and next you have to do this one is to be done by you. So this was a workout session, children. Now let's see
Measuring the computer's memory. How can we measure the computer's memory? The computer can understand binary language. So जैसे हम हिंदी समझ सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है. It processes and stores data and instructions in the form of binary language. ये क्या करता है? डेटा को स्टोर या प्रोसेस करता है बाइनरी लैंग्वेज के रूप में. अब बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 and 1. सो बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें वो 0 और 1 को ही समझता है. एंड दीज आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. इन्हें बाइनरी डिजिट या फिर बिट्स कहा जाता है. अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन which a computer can process and store. So सबसे छोटी जो यूनिट है वो होती है हमारी बिट, जिसे आराम से कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है या स्टोर कर सकता है. A group of 4 bits is called a nibble. तो जब 4 बिट मिल जाते हैं तो उसे निबल कहा जाता है. और a group of 8 bits is called byte. और 8 बिट्स जब एक साथ मिलते हैं तो उसे बाइट बन जाता है. A computer memory is stored in the form of bits and bytes. So, जो भी कंप्यूटर की मेमोरी है या बिट्स या फिर बाइट्स के रूप में उसे स्टोर किया जाता है. एवरी कंप्यूटर हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी. हर कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है. द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर डिटरमाइंस हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. सो मेमोरी कैपेसिटी जो होती है कंप्यूटर की वो ये बताती है कि कितने डेटा को स्टोर किया जा सकता है. देयर आर अदर हायर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मेमोरी are given here. We are going to learn about them. So कभी भी जब भी हम मेमोरी को लिखते हैं तो 1024 में लिखते हैं. So 1024 बाइट इज, बाइट आपको पता है कि स्मॉलेस्ट है. So 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट. 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट and 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte and 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte, 1 TB. Never write with a pen or a pencil on a disk. डिस्क जो हमें होता है, जो हमारे हमने अब डिस्क के बारे में पढ़ा, CD, DVD और ब्लूरे डिस्क, इनमें कभी भी पेन या फिर पेंसिल की से नहीं लिखना चाहिए. Never put the pen drive inside the USB पोर्ट. USB पोर्ट में कभी भी पेन ड्राइव को जबरदस्ती हमें पुश नहीं करना चाहिए. बहुत आराम से देख के देन पुश करना चाहिए. यूजुअली ऑल द स्टोरेज डिवाइसेस, यूज ऑल द स्टोरेज डिवाइसेस केयरफुली. जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास है बहुत ही केयरफुली हमें उन्हें यूज करना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले. सो दीज वर आवर कंप्यूटर मैनर्स चिल्ड्रन. Now let's quickly come to the recall time. The storage capacity of a computer is called its memory. And the computer memory is used for storing data and instructions. A bit is the smallest unit of information which a computer can process and store. A group of 4 bits is called a nibble and a group of 8 bits is called a byte. Computer memory is of 2 types. दो तरीके के होते हैं, primary memory and secondary memory. Primary memory is of 2 types, RAM and ROM, and ROM is of 3 types, PROM, EPROM and double EPROM. Workout में आपको ये fill करना है. Secondary memory devices are hard disk, CD, ROM, DVD, pen drive, Blu-ray disc and memory cards. Now let's quickly come to the book exercise, children. Take the correct option. A group of 8 bits is called byte. Yes, correct. 1 TB is equal to 1024 GB. Which type of memory is known as the main memory? So, primary memory is known as the main memory. Which of the following is not a secondary storage device? So, from all these, the secondary storage RAM is not the secondary storage device. Now let's come to the next exercise, children. Fill in the blanks. A computer can understand dash language. Yes, we have learned about the binary language, 0 and 1. A computer memory is stored in the form of dash and dash.
So memory can be stored in the form of bits and bytes. Next, a dash memory is the inbuilt memory that is fixed inside the CPU. So which memory is fixed inside the CPU and it is inbuilt memory? So children, the answer is primary memory. Next, fourth question. A pen drive is also known as a pen drive को और किस नाम से जानते हैं हम? Yes, flash drive. Fifth question. A dash uses blue-violet laser to read and hold a large amount of data. So what is the answer? Answer is given here. Blu-ray disc. Write it down. Blu-ray disc. So children, let's quickly come to the true and false. 1 MB is equal to 210 KB. No, this is false. In most computers, RAM is used for storing a special program called BIOS. No, this is also false. ROM is volatile in nature. No, ROM is involatile in nature. This is also false. Secondary memory is also known as external memory. Yes, जो भी secondary memory होता है उसे हम external memory के नाम से जानते हैं. And a hard disk is also known as fixed disk. So this is also false. So children, first three are false and the rest two are true here. Now let's quickly come to the question and answers, children. What is computer memory and also name its type? So computer memory is divided into two parts, that is primary memory and secondary memory, and the primary memory is again divided into RAM and ROM. Now the second question is explain primary memory. What is primary memory? Primary memory is the memory of the computer that is permanent and it is divided into two parts, that is RAM and ROM. RAM is random access memory and ROM is read-only memory. Whatever information we feed on RAM that is volatile in nature and ROM is involatile in nature. So this was our primary memory, children. Now next is differentiate between RAM and ROM. So here first the full form of RAM is random access memory and the full form of ROM is read-only memory. RAM is volatile in nature and the ROM is involatile in nature, which means whatever information we have stored in RAM that gets erased easily वो erase हो जाता है, but the information that we save in ROM can not be erased easily even if we switch off the computer. So this is a basic difference between these two. What do you mean by the secondary memory? So secondary memory, a computer needs a secondary memory so that more information can be stored in it. So the computer there are many secondary memories we have learned in this chapter, and the few are CD, DVD, hard disk and pen drive, Blu-ray disc. So these are some of the secondary memories which help our computer to remember, or we can keep our information, whatever data that can be kept safe in the secondary memory. Now the fifth question says explain Blu-ray disc and memory cards. So here we are going to talk about the Blu-ray disc. Blu-ray disc tells us it looks like a CD or DVD. It looks like a CD or DVD and it uses blue violet light through which we can you can say Blu-ray disc uses a blue violet light and in which you can
store the information, and for reading the Blu-ray disc we need a Blu-ray disc reader. Similarly, there is a memory card which is very small in size and it can be used in our smartphones, in our laptops, it can be used in other electronic devices. It is used for storing the data, and whatever data we have stored in our memory card, that can be transferred to a computer and can be saved there. So these two are the secondary, these two come in the secondary memory. So children, this was the explanation of this. Now, this was all for today, dear children, in this chapter, and I'll be waiting for you in the next chapter with a new video, with a new chapter. Till then, stay later.